So welcome everyone. Welcome to the debate event, and I hope that everyone knows that how this debate system will work. So then, before starting, let us all give a short introduction of ourselves. We will just start. So then, in this introduction, we just need to tell our full name and from which city we belong, and what are you doing, like profession wise, or whether you are a student. So first I would like to invite Sulekha ma'am. सर सर आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन? जी 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 अभी थोड़ा हम सर आप हिंदी में सर बोल सकते हैं? हाँ जी जी जरूर जरूर। तो मैंने बोला कि अभी हम सबका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें हम सिर्फ हमारा नाम, हम कौन से शहर से है, और हमारे प्रोफेशन के बारे में बताएंगे। एक लाइन का इंट्रोडक्शन। सर मेरा नाम सुलेखा गुप्ता है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। थैंक यू सुलेखा मैम। अफजल जी। हाँ जी सर। ओके, तो सर मैं सबसे पहले आप उन लोगों को अपना है नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम अफजल खान है और मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ और मैं प्रोफेशनली एक इलेक्ट्रिकल ऑडिट इंजीनियर हूँ। सर मैं थोड़ा लेट आने के लिए माफी मांगता हूँ, क्योंकि सर मैं अभी मैं तुरंत पहुंचा हूँ। मैंने तुरंत मीटिंग ज्वाइन की है। थोड़ा 10 मिनट के लेट आने की माफी। कोई बात नहीं अफजल जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अंकित। Yeah. Good morning, everyone. I am Ankit Singla, and I am from Rohtak, Haryana. I am pursuing chartered accountancy profession. Right now, I am at CA final level. Yeah, this is my vision. Thank you, Ankit. Bhushan sir. Hello everyone. My name is Bhushan Khandekar. I live in Mumbai and currently working in State Government of Maharashtra Electricity Department. Thank you. Thank you, Bhushan sir. Akmal. जी मेरा नाम अकमल है और मैं पाकिस्तान से हूँ और करंटली मैं दुबई में हूँ और मैं सिविल इंजीनियर हूँ एज अ प्रोफेशन वाइज। और दैट्स इट। थैंक यू अकमल जी। अंकित। हेलो सर, मेरा इंट्रो हो चुका है। ओके 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 सॉरी। हरीश सर। Hi Rohil. Good. Is this the intro round? Hello. Yeah, sir. Am I audible? Yes, sir. You are. Okay, yes, so sir, you are audible. yeah. So good morning, everyone. This is Harish Usgaonkar. I am from Goa. I am a software engineer by profession, and I am also entrepreneur right now, working on my startup. So that's about me, and I'm now here because I love debates and I want to experience the this particular discussion as an audience. So I'm looking forward to it. Thank you, sir.
Pawan. Thanks guys. All the best. Pawan. First of all, good morning to all of you. My name is Pawan Parashar and I'm from Madhya Pradesh, and I'm a student, and I joined the TISA 2 months ago. Thank you. Thank you, Pawan. Praveen. Yes, sir. Yeah, hello everyone. My name is Praveen. I am from Nagpur and I'm currently working as a software engineer. Thank you. Thank you, Praveen. Santosh, sir. Yeah. Hello, good morning, everyone. My name is Santosh Khaire. I am from Bangalore, Karnataka, and presently working as a software engineer for Nordson India Private Limited. Thank you. Thank you, Santosh, sir. Shubham. Hello everyone, my name is Shubham Malunjkar and I am a BCom graduate. And right now I'm pursuing MBA from Alkesh Dinesh Modi Institute, which is in Mumbai. Thank you. Thank you, Shubham. Tosif. Tosif Khan. I guess he's not there. Okay. Ankit Pandey. Ankit Pandey. Okay, so I guess. Okay. Hello everyone, myself Ankit Pandey, and I'm basically from Gorakhpur, UP. Right now, I'm a second year college student, and I love to reading books, and I like to play volleyball. Thank you. Thank you, Ankit. Sarthak. Hello everyone, my name is Sarthak Oberoi. I am from New Delhi. I am currently doing SO legal intern in TISA court. Thank you so much. Thank you, Sarthak. So I hope everyone has got their chance. Myself, Rohil Zharke from Nagpur, currently working as a junior specification engineer. So thank you, everyone. So now I would like to request the leader of the team who will be speaking for the topic. Please unmute your mic. Leader for the team who will be speaking for the topic. Please unmute your mic. कुणाल जी आप बोलेंगे ना आप एज ए लीडर या Okay, so okay, so Kunal ji, please introduce your team and also tell their roles. Okay. Good morning to all of you. I am Kunal Kaushik and I am in group A, means I will favor the topic, and I am the leader of the group, and Pawan and Ankit ji are my supporters in my group. And sorry, not Pawan. Pawan ji and Sarthak sir will be work as supporter, and Ankit will play a role of whip, and this is our team. Thank you, Kunal. Yes, and the team who will be speaking, the team leader who will be speaking against the topic, please introduce your team. Hello. Good afternoon, everyone. My name is Shubham and I'm the leader for Group B. And for the support, we have Afjal Khan and Akmal ji. And as a whip, we have Bhushan Khandekar sir.
and we will be talking against the topic. Thank you. Thank you, Shubham ji. So guys, today's debate topic is should there be a minimum salary for the working class in India? Like, just for an example, in other countries, like say like the United States of America, if you are a chemical engineer, then whichever company you join, in whichever part of um, America, there will be a basic salary, say like XYZ dollars. So then should that be implemented in India, in India as well? So then for this, every participant will get maximum 4 minutes to keep their point. So then which of the leaders wish to start first? So Kunal, you want to go first? Okay, Kunal. So Kunal, your time starts now. Okay. So topic is should there be a minimum salary for the working class in India? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ऐसा अक्सर यहाँ देखा जाता है कि जितने भी लेबर हैं वो मीन्स उन लोगों को सैलरी दिन भर का 300-400 रुपया महीना मीन्स पर डे के हिसाब से मिलता है, और जो कि फुल मंथ का अगर काउंट किया जाए तो वो 9 से 10 हजार रुपये ही मिनिमम कमा पाते हैं। तो ये मीन्स उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो लोग अपने फैमिली को एक अच्छे तरीका से चला सके, मीन्स अपने फैमिली का पालन पोषण कर सके। तो इंडिया में तो खैर अभी तो लेबर क्लास लोगों के लिए ₹178 है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई है, लेकिन ये तब पर भी बहुत कम है। और इसके अलावा और अगर और सब सेक्टर में देखा जाए तो मीन्स लगभग सेक्टर में तो जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको मिनिमम से कम ही सैलरी मिल रहा है। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट टीचर्स को जो सैलरी मिलती है वो प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल में जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनको सैलरी मीन्स 30 या 35 या 40 हजार रुपये गवर्नमेंट मीन्स अलग अलग स्टेट में उनको मिलती है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो फिर वही टीचर जो वेल क्वालिफाइड है उसको 10 या 12 हजार या 15 हजार रुपया मुश्किल से मिलती है। तो ये जो गैप है, तो ये गैप बहुत ज्यादा बड़ा गैप है। तो इससे जो भी प्राइवेट वर्कर या प्राइवेट टीचर हैं जो वर्क कर रहे हैं स्कूल में, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको सैलरी बहुत कम मिलती है और वो लोग अपने जो मीन्स अपना जो मीन्स जो फैमिली को चलाने का खर्च होता है वो लोग नहीं पा पाते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ये हो गया सेकंड फर्स्ट केस। और अगर यूएसए के अगर कंपेयर में अगर देखा जाए तो यूएसए में एक एवरेज जो लेबर का मीन्स वहां पर जो उसको वेजेस मिलता है तो वो $7.25 मिलता है, जो कि मीन्स वहां पर यूएसए में तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग वहां का मिनिमम सैलरी फिक्स किया हुआ, लेकिन एवरेज अगर सैलरी देखा जाए तो $7.25 है, जो कि अगर 1 मंथ का अगर कॉस्ट मीन्स अगर जोड़ा जाए तो ये लगभग 1 लाख से भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा अच्छा है वहाँ के लेबर क्लास लोगों के लिए कि उन लोगों का अगर कोई भी तरह का काम अगर वो करते हैं तो वो लोग मिनिमम 1 लाख रुपया कमा ही लेंगे। लेकिन यहाँ इंडिया में क्या है कि अगर आपके पास स्किल भी है और अगर आपके पास अगर नॉलेज भी है, सारा चीज है, लेकिन यहाँ पर सैलरी ही इतना कम है, या मीन्स कोई सरकार के द्वारा कोई पाबंदी नहीं बनाया गया है जो कि प्राइवेट वर्कर्स की है। तो इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट को ज्यादा फायदा होता है, और जो भी वर्कर हैं या जो प्राइवेट एज ए मीन्स वर्क करते हैं उनको सीधी इसका मीन्स इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इंडिया में सरकार को मीन्स इस पे फोकस करना चाहिए, या जो मिनिमम वेजेस का जो एक्ट है उसको यहाँ पर लागू करना चाहिए। और एक चीज क्या
मीन्स हम लोग अक्सर देखते होंगे कि जितने भी बड़े शहर हैं वहां पर रहने का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा पड़ता है, या वहां पर रहने खाने और प्लस जो भी डेली मीन्स मंथली का कॉस्ट पड़ता है वो ज्यादा पड़ता है, लेकिन छोटे शहरों में या रूरल एरियाज में वहां पर कम पड़ता है। तो गवर्नमेंट को इस चीज पे भी फोकस करना चाहिए कि जो भी वर्कर जो जो अर्बन सिटीज में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वर्क कर रहे हैं उनको वहां पर ज्यादा सैलरी का मिनिमम सैलरी वहां पर ज्यादा बांधा जाए, और एज कम्पेयर टू अर्बन एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। और चीज कि बहुत सारे स्टेट में ऐसा देखा गया है कि वहां पर जैसे कि अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में मीन्स उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इसके कारण से वहां पर मिनिमम सैलरी, मैंने एक डाटा कलेक्ट किया था कि नागालैंड में एक लेबर लगभग 175 रुपीज ही कमाता है कि मीन्स पर डे के हिसाब से। तो अगर मीन्स फुल मंथ का अगर देखें तो वो लगभग 5 से 6 हजार रुपया ही कमा पाता है। तो आप तो ये समझ कुणाल सकते जी हैं कि 5 से 6। ओके तो फिर ओके तो कुणाल जी आप ये बोलना चाहते हो कि बेसिकली इंडिया में फाइनेंशियल गैप काफी ज्यादा है। ओके बिल्कुल बिल्कुल। जी और एक जी 10 जी सेकंड लेंगे। और सॉरी एक रिपोर्ट माफ कीजिएगा कुणाल जी, आपका टाइम खत्म हो गया है। रियली सॉरी। नाउ आई वुड लाइक ओके अभी मैं now I would like to invite the leader of the groups who speaking against the topic. Okay, so I will start. Your time starts So now. I have some points which I will try to explain them in short. I will not take much time. So I have first point, it is unemployment, right? So if we approach it by classical economical approach, then we have demand and supply, right? So if we have to give the workers minimum wage, then the supply of the jobs will go up, because more people would want to work. And on the other hand, the firms and companies would not want to employ more people because they would not be able to afford it, right? So the demand will go down. As a result, the unemployment rate will go up. So the second point is youth will lose out the most. So as the unemployment will go up, it will be the youth will lose out the most, because the firms will want to employ the people who are more experienced in that field, and they would not want to hire freshers because they lack the technical skills which are required for that particular job. So the third point is there are managers and normal workers. So if we provide the basic workers minimum wage salary, then the gap between the superior salary and the worker salary will go down. As a result, they will not respect their superiors. As a result, the superiors would want salary as a higher rate. And the next point is cost to business, right? So if the businesses have to pay minimum salary for everyone, so their cost, like their expenditure, would go up. As a result, they would want to shut down their business. I will give you an example. In UK, when they wanted to implement the minimum wage salary, many firms came out with a report saying that if this happens, they will have to shut down the business. So the next point is regional differences. So the cost of living in Mumbai is much higher than the cost of living in some town, right? So if the person who is working in a factory in Mumbai is earning the same money as the person who is working in a town, then that would not be equal, right? Because the cost of living is higher here in Mumbai than the town. Then the next point is the India is already in a debt, right? So if they have to pay everyone the minimum wage, then
they will go in more debt, because the jobs which are not worth that amount will have to give them the money, minimum wage. So that's it from my side. Thank you. Well done. Thank you, Shubham. According to Shubham, he says that if this law will be implemented, then there will be many job losses, and many companies will have to face financial losses as well. So then now, what does the support has to say? Uh, Safe for this? I would like to invite the first supporter from the team who is speaking for the topic. Yeah, so uh, so uh, 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 I want to say something in the support of the group A, that first thing is that according to the sociologist, the social class has been divided into the five strata, that is known as upper middle working, and the lower class. But now we are talking about the working class. It means that and the working class is that class who is unskilled and who do not have a college certificate, you can say that. And it comprises 30 to 35% of the population, where there is no quality of education, and there is they work in a unskilled and semi skilled industries. So if I talk about the basic salary, in the previous time, it was like that, that you get the 40% of the gross pay. But in the but uh, but in the news, it is like that ki now it has been changed, and according to the new rules, the basic salary cannot be less than 50% of the CTC. The CTC is the net cost of the company, and this new base code can be implemented anytime after the April 22. So now I want to tell you the benefits of the basic base. So first is there is there is provided a PF, that is known as Provident Fund, and in which it helps to it facilitates which I mean secures the future of the employees, whoever is working in a as a worker. So in this Provident Fund, 20% of your basic is considered as a PF, and 12% is added by the company side. And second one is, all this process happen under the government rules and regulation. So there is no discrimination on the basis of disability, gender, and your performance. And the number three is that basic payment means that you are fulfilling the basic social needs of every individual. And number four is that basic salary is a symbol of progress. That is why, because it is adopted, and this is why it is adopted in mostly every country, in every sector of the private or the public sector. And another point is that it is also the right to get salaries or the pension is a part of our constitution. And it is said that the right to life and the liberty is the fundamental right. And my last two points is that if there would be no basic salary, then
employees get unequal amount of money. I mean, even after having the same knowledge or unskilled, and that would definitely increase the discrimination. And the last point is that if someone is against the basic salary, it means that they are against to all the working class who are expecting the minimum wages, and that is why the minimum wage act comes into existence. Thank you, thank you. Very nice point shared by Pawan. So then, according to him, the basic salary is given according to the overall profit of the company, and then other than that, they also provide other benefits like the PF and all. So then now let us see that what the supporter for against the topic has to say for this. Okay, I am going to start. Okay, तो है मैं जो है अपने पॉइंट बोले मैं उनको एग्री करता हूँ और मैं कुछ पॉइंट ऐड करता हूँ। अगर तुम्हारे पास स्किल्स इंप्रूव होगी, तुम है देखिए, अगर आई हैव एग्जांपल, अगर तुम्हें छोटी पोस्ट पे हो तो है धीरे धीरे तुम्हारा इंक्रीमेंट होता रहता है। अगर आप एक की पोस्ट पे लगते हो किसी भी कंपनी में, तो धीरे धीरे आप एक बनते हो और धीरे धीरे आप मैनेजर बनोगे। एकदम से हाईली सैलरी पे है डिपेंडेंट नहीं होता है, जैसे कि हम लोग है यूएस में भी देखते होंगे। जैसे कि हम लोग है यूएस में देखते होंगे कि इंसान धीरे धीरे सैलरी पे जाता है। और अगर मैं महंगाई की बात करूं, इंडिया में उस हिसाब से अभी उतनी है महंगाई नहीं है कि कंपनियां लोगों को हाईली सैलरी रिकमेंड करेंगी। और है अगर जो कंपनी हाईली सैलरी है देती भी है, वो उनकी एबिलिटी के अनुसार देती है। जैसे कि हमारा जो साउथ के स्टेट है, कर्नाटक है, हैदराबाद है, वहाँ पे है लोग बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड है, उनके पास टेक्निकल स्किल्स भी है, कम्युनिकेशन लेवल भी काफी अच्छा है, तो वहां पे उनको ज्यादातर सैलरी मिलती है। बट अगर अपने नॉर्थ साइड की बात करें, यहाँ पर है जो लोग हैं उतना स्किल्स नहीं है। हालांकि एजुकेशन है, बट एक होता प्रैक्टिकल स्किल, काम करने का तरीका क्या है, उसी हिसाब से इम्प्रूवमेंट होता रहता है। और अगर इस पॉइंट को ध्यान सप्लाई से करूं कि हर स्टेज पे कंपनी ने है डिमांड सप्लाई का रूल रखा है। अगर एक छोटी पोस्ट के उनको सैलरी है, क्योंकि उनके पास इतना ये अफजल जी, क्या आप आपका वीडियो ऑफ करके बात कर सकते हो, क्योंकि आपका आवाज बहुत अनस्टेबल है। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि है महंगाई के बारे में। अब वॉइस मेरी क्लियर है? हाँ ओइल सर। हाँ अफजल जी, ओके, अभी क्लियर है। हाँ, तो मैं वही बात कर रहा था कि अगर आपके पास टेक्निकल स्किल है और एक आपका लेवल काफी अच्छा है, तो कंपनियां अच्छी सैलरी भी देती हैं। बट अपने आप को इम्प्रूव करना सीखे, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, तो आप ग्रोथ करेंगे। आप ग्रोथ करेंगे तो आपका देश भी ग्रोथ करेगा। अगर हम तुलना करें इंडिया की
की ओर है अमेरिका की। अमेरिका का एक लेवल अलग हो चुका है क्योंकि वहां के लोगों ने अपने आप को डेवलपमेंट किया है। इंडिया भी बहुत पीछे है क्योंकि यहाँ का इंसान खाली है कॉपी करता है, खुद चीजों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता, सिर्फ कॉपी करता है। तो सर है मेरा है यही पॉइंट है, ओवरऑल अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए और जो भी है धीरे धीरे ही इंसान हाई वेजेस पे पहुंचता है, एकदम से कोई नहीं पहुंच जाता। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। लेकिन आप इसके फेवर में थे या फिर उसके अगेंस्ट में? पता ही नहीं पवन चला। जी एक सेकंड जी सो थैंक पवन जी सबको बोलने का चांस दिया जाएगा। सो अफजल जी थैंक यू। सो अफजल जी ने भी काफी वैलिड पॉइंट शेयर किया है। तो फिर अफजल जी ये बोलना चाहते थे कि अगर हम रोज हमारे स्किल्स इंप्रूव करते जाए तो फिर हमारे स्किल्स के साथ साथ हमारी इनकम भी इंप्रूव होगी। सो फिर अभी देखते हैं कि फॉर द टॉपिक के जो सेकंड सपोर्टर है वो इसके ऊपर क्या बोलना चाहते हैं। Hello, am I audible? Yes, Just give me a 30 second. Okay, sure. Tell me whenever you will be ready. So I will start with my topic. So in my opinion, there is a law called Minimum Wages Act 1948, which was again repealed in 2019 by the Parliament. It has repealed the four act which was prevailing from the pre-British era and which was of no use. So there are certain kind of law in Indian legislation which provide and protect the interest of the labor, but we have to think that these law are in nature or not, that they are helping the people or not. Wages have to grow. If income and standard of living have to improve, will a higher minimum wage help? Will that cream employer lead to our lower employment, or will it help workers? While per capita income in India arose by nearly 7 to 8% per year during 2003 to maybe 2013. Subsequently, this growth has slowed down from the last few years. This was also a period when rural wages were rising. India labor market has 90% of its workforce in the informal or unregistered sector, which means that they work either without a written contract or without any help and retirement benefits. Even in sector where there is a significant registered permanent employment, the ratio of permanent contract workers is very skewed, which is also reflected in their respective benefits and pay. Sometimes this creates a de facto caste system where for the same work, a contract worker is paid much less than a permanent worker. Such conditions can create stress and unrest, sometimes leading to immediate outcomes like the violence few years ago in an auto plant in Manesar. Due to the large number of informal and seasonal workers, the data on wages and earning is notoriously bad, and according to some survey, wages have stagnated in recent years. Of course, during the pandemic, there have been large-scale job losses too. When surplus labor move out of agriculture, it is coming from disguise and unemployment. So productivity is nearly zero. Hence, even a small wage is a decent improvement on zero. This process of absorbing surplus labor from zero wage can continue for a long time until agriculture no longer has any surplus labor. Indeed, this way of strategy of sustaining high growth and high export at low and constant wages in China, the low wage workers were taking away higher wage jobs from advanced countries. The low wage in China meant that much of the benefit of high GDP growth was going to capitalists. In this case, mostly state-owned enterprises, that profit was continuously replugged, leading to high GDP growth rate. To some extent, it can work in India too, only if industrial employment increase continuously like it did in China. But unlike China, India's services sector is nearly 60% of the GDP, which means national income. It employs only 25% of the workplace, which means that service sector just taking the 25% of the workforce
Remaining are from the unskilled and you can say un Hello, am I audible? Yes, Hello? yes, yes. Yes. So remaining 75% of the population is from unskilled background, or you can say not that educated or working in a corporate sector. So if it is not as if raising the minimum wage in India will make jobs vanish out of the country. This is because these low paying jobs are mostly in the service sector, which is non-tradable sector. Besides, if the increase in the minimum wage is not very large, it does not even affect the demand for those services. Think of the wages paid to farm laborers or security guards or courier services worker. Even the economic workers such as taxi-based driver feel this squeeze. An increase in their wage surely will not affect the demand for those services, nor it will lead to the decrease in employment. This has been amply documented by the researcher in America, who showed that contrary to the populist capturing the increase in minimum wage in most sectors just mean that consumer pay more. When a McDonald worker gets a 50% higher minimum wage, the burger price goes up by the 25 cents. This is a social tug of war. This is a way of transferring income from consumer to workers without causing a burden to the executors. It is similar to the increasing the minimum spot price to farmers so that urban consumer pay a bit higher for food. The farmer earns a bit more. This removes the urban bias of the food policy. Similarly, an increase in minimum wage will remove the pro-employer bias of the wage policy. The current national wage of the India is 176 per day, which has to be revised as soon as possible. So there are certain kind of law which is governed by the state as well as the union, but we have to introduce national level body which will take care of all the different kind of fees. And we know that India is a largest country in terms of the population, so we have to deal with I'm over. Okay, so yes, thank you. I am just ending my point by saying that we have to increase the per day income of employers. Thank you so much. Thank you, Sarthak ji. Very valid point shared by Sarthak ji. So then, summarizing few of it. So if we increase the basic income, it will also reflect in the increase GDP of our country. So then now I would like to invite the second supporter for the team who is speaking against the topic. Yes, hello. I'm Akmal, and I will be talking against the topic. So my point is, if we have a minimum wage for the employers, then there are some companies who start operating a new, they open their new companies, and at that time they have to pay their labor minimum salary, and it will, because in any business, wage the main cost of doing business. So at the start of their business, if they have to pay more to their laborers, then it will create a low chances of success of the company. And my second point is, if we have a if we have a minimum wage, then the cost of living will also increase in the country, and in that sense the prices of the products will also increase. So in this world we have to compete with the other world, and if our products are more costly, then we cannot compete with the other world, and it will leave low export. And the third point is, if there is a minimum wage, then the companies they will hire some more qualified people who can do 2 or 3 works at a time, and they will give them salary only to them, because because instead of hiring 2 or
3 people, they will hire only 1 person, like in Dubai, because here they have to pay every labor their visa, their residence, their travel, and a lot of things for the office people. So they try to hire a person who is more qualified and who can do more things. So in that sense, a lot of people will not get their jobs. And my fourth point is, yes, it's also the same that if we have a if we have a minimum wage, then a lot of companies will hire overqualified people, and the inexperienced people will be they will not get the chance to enter in their profession. And like for engineers in Pakistan, some companies who have started their business now, they can hire an engineer for a lump sum basis. They just pay them for the whole year, and they take their documents, and then they register their company. So if they have a minimum wage, then they have to pay that salary to that person. So in that case also, the success of their company will be low. That's it. So thank you, Akmal ji. So Akmal ji shared some live examples from Pakistan and Dubai. So then, according to him, at the beginning of a company, it will be very difficult for the company's success if this rule is implemented. And secondly, according to him, the companies will not generate more jobs. So then now let us see what the whip for the topic has to say. Ankit? Yeah. Hello everyone. मैं बोलना चाहूंगा ओके जैसा कि सार्थक भाई ने बताया कि इंडिया के अंदर पहले 4 एक्ट थे, ठीक है। 4 एक्ट के अंदर अलग अलग से चीजें लिखी हुई थी, जो कि बहुत ही मतलब उसको हम अच्छे से एलोबरेट नहीं कर पाते थे। तो उसके चलते हुए 2019 के अंदर एक कोड बनाया गया है, जो कि चारों एक्ट को कंपाइल करके ही बनाया गया है। तो अगर हम उस एक्ट को अच्छे से पढ़ें, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो मिनिमम वेज होगी वो एज पर स्टेट्स गवर्नमेंट होगी, जो भी उस स्पेसिफिक स्टेट की गवर्नमेंट बोलेगी वही होगी, और अगर उससे कम देंगे तो उन पे पेनल्टी लगेगी। तो उन्होंने पेनल्टी बोली कि 1 लाख और 3 मंथ की जेल, ये सब उन्होंने बोला है। बट अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के मिनिमम वेज की बात करें, तो उन्होंने लाइक मैं आपको बोलूंगा बिहार, राजस्थान, और एक है कर्नाटक और एक है केरल, इनके अंदर जो मिनिमम वेज उन्होंने रखी हुई है वो रखी है 300 से लेके 500 तक। तो अगर हम देखें कि 400 रुपये पर डे, अगर हम 400 में देखें तो एक अगर पर्सन है तो उसके साथ आप मान सकते हो कि 4 पर्सन एसोसिएट होते हैं, लाइक एक वो खुद होता है, एक उसकी वाइफ भी बोल सकते हो, तो उसके साथ में बच्चे भी हम एवरेज मानते हैं। तो चार बंदों का खर्च मेरे हिसाब से तो चल नहीं सकता 400 में। अगर आप देखो उनके खुद की लिविंग एक्सपेंस भी है, उनके बच्चों की एजुकेशन भी है, और XYZ बहुत से खर्चे होते हैं। हमको तो पता ही है, हम सारे ऑलमोस्ट एवरीवन लाइक इज फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, ठीक है। और यही अगर मैं फॉरेन कंट्रीज की बात करूं, तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर मैं आपको 2 या 3 कंट्रीज की एवरेज बताता हूँ। USA के अंदर 7.30 डॉलर है, ओके। ऑस्ट्रेलिया के अंदर $12.60 है,
जर्मनी के अंदर $11.80 है। और इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि जब मैंने ये डीपली पढ़ा तो ये पर आवर था, मतलब उनको एक आवर का $7.80 मिल रहा है। अगर आप इसको मंथली निकालो, अगर मैं इसको मंथली निकाल रहा हूँ तो इसका 1,40,000 बन रहा है। तो इट्स लाइक इंडिया में तो आपको 10,000 रुपए भी नहीं मिल रहे और वहां पे आपको 1,40,000 मिल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग डिपेंड होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वेजेस मिलती है, बट इतना फर्क तो नहीं नहीं हो सकता जो जो मुझे लगता है। और जैसे जैसे कि शुभम जी ने बोला था, जो कि लीडर है अपोजिट टीम के, उन्होंने बोला था कि कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। तो मैं इसके कंटेक्स्ट में बोलना चाहूंगा कि कंपनीज की अगर आप ग्रोथ को देखें तो उनकी ग्रोथ एक साल में 1,000% उनकी ग्रोथ होती है। अगर उनके हम 5 साल की ग्रोथ देखें तो वो कई कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि 30 गुना भी अपनी वैल्यू का मल्टीप्लाई करती हैं। तो अगर उनकी ग्रोथ 30 टाइम्स की बजाय 25 टाइम्स हो जाएगी और उसको अगर हम उनके एम्प्लॉयमेंट को एक अच्छी सैलरी देने में लगाएंगे तो उसके एम्प्लॉयर का भी काम करने का मन करेगा, तो वो भी अच्छे से काम करेंगे। तो आई थिंक उससे मेरे को ये लग रहा है कि कंपनी को लॉस तो नहीं होगा, बल्कि कंपनी की ग्रोथ और भी अच्छी होगी, क्योंकि सारे एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे। और अफजल भाई ने बोला था कि ग्रोथ रेट है, मतलब जस्ट सपोज कि हर एक साल आपकी बढ़ते रहेगी, आपकी एकदम से नहीं बढ़ेगी। बट मुझे क्या लगता है कि ग्रोथ रेट इंडिया का बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज। और मेरा एक पॉइंट और है बस, अ, अकमल भाई ने बोला था कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, बट मुझे ये लग रहा है कि बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि इंडिया से ही जाते हैं, लाइक आप बोल सकते हो टेक्सटाइल, या फिर आप ना फूड के आइटम्स बोल सकते हो। तो अगर उसका रेट थोड़ा सा इंक्रीज भी हो जाए तो हमसे ही लेने पड़ेंगे। या ये ही मेरा पॉइंट। जी, thank you Ankit ji, very basic but very valid points shared by Ankit. And yeah, and and I must say wonderful job done by a whip. So now let us see what the whip for against the topic has to say. थैंक यू रोहिल फॉर गिविंग मी अ चांस। अगेंस्ट द टॉपिक में ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये मिनिमम वेजेस एक्ट अगर होता है तो कंट्रीज का क्या होता है कि इंटेंसिव लेबर कंपनीज जो है, इंटेंसिव लेबर प्रोडक्शन कंपनीज वाली जो है, वो कंपनी अपने कॉम्पिटिटिवनेस लूज कर देगी, क्योंकि उनको हमको ये जो है उनको कंपनीज के लेबर को एटलीस्ट वो उतनी सैलरी देना पड़ेगा, और फिर वो कंपनीज उतना अपना जो कंपनीज का प्रॉफिट है वो प्रॉपरली सस्टेन नहीं कर पाएगी, इसलिए वो ऑटोमेशन की तरफ जाएगी। तो इट विल इम्प्रूव द ऑटोमेशन ऑफ द कंपनीज। और जो सेकंड पॉइंट है, या अगर कंपनीज को उतना पैसा अपने लेबर को देना ही है तो वो कंपनीज अपना काम जो है वो आउटसोर्स करेंगी बाकी जो भी अदर कंपनीज है वो कंपनीज में। और एक जो चीज है कि ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, ये जो ह्यूमन बीइंग का फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम फॉर बार्गेनिंग, ये जो है ये उसको हैम्पर करता है। सेकंड, अगर मिनिमम वेजेस सैलरी अगर हाईएस्ट होगी तो जो अपने स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो कि ये ऐसे प्रैक्टिकली हम हमारे विलेजेस में देख चुके हैं कि स्टूडेंट्स अपनी जो स्कूलिंग कॉलेजेस छोड़ के स्टार्टिंग में तो उनको अच्छा लगता है कि अच्छे प्राइस में सैलरी हमको मिल रही है, पर इन लॉन्ग टर्म में वो
अपनी जो लाइफ है वो स्पॉइल कर देंगे। लास्ट में ये जो अमेरिका में 1928 में ये लॉ लाया था रूजवेल्ट ने, वो उस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन था। एट दैट टाइम उन्होंने बेसिक मिनिमम सैलरी का नॉर्म यहाँ लाया था, लेकिन व्हाट हैपेंड कि बाकी जो ईयर्स में जो आगे चल के 1968 में इन्फ्लेशन रेट एकदम $15 पर घंटा हो गया था, लेकिन इनकी जो मिनिमम सैलरी है ये काफी लो थी। ऐसे भी होता है कि अगर आपको मिनिमम सैलरी मिली तो वो कंपैरेटिवली इन इन्फ्लेमेशन से वो काफी ये होता है, और उसका अल्टीमेटली जो लोअर गरीब जनता जो है उसको अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं मिलता। और हमने एक लास्ट में पॉइंट बोलूंगा, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है फर्म है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ द कंट्री, ये ऐसे बोलता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है कि वो हैप्पीएस्ट कंट्रीज है, और उसके जो नॉर्म्स है वो खाली अपना इनकम या जीडीपी नहीं रहता, उसमें आपको सोशल सपोर्ट कितना मिलता है, आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कितनी है, आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस क्या मिलता है, आपके यहाँ पे करप्शन कितना है, और आपके यहाँ पे जेनरसिटी लेवल कितना है। तो इसमें मैंने स्टडी करके पाया है कि जो कंपनीज में मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं है, लाइक फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड डेनमार्क, ये कंट्रीज सबसे हायर लेवल पे है इन टर्म्स ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। ये ऐसे क्यों हुआ है, इसको भी हमारे गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए, और इसको भी यूटिलाइज करना चाहिए इन व्हाट वे दे आर ट्रीटिंग देयर कंट्रीज लेबर। तो उनके यहाँ पे क्या है, उनके यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी है, वो मिक्स इकोनॉमी है, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म मिक्स में आते हैं, और वहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग यूनियंस है, और यूनियंस क्या करती है कि कंपनीज को कलेक्टिवली बार्गेनिंग करती है, और उनके जो लेबर फोर्स है उनको प्रॉपरली, उनको जो भी प्रॉपर वेजेस है वो दिया जाता है। तो हमको उस डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए। और लास्टली Bhushan sir, इंडिया your का time जो is भी up. मिनिमम वेजेस। Bhushan sir, your ओके, time थैंक is यू, up. Yeah, so थैंक यू, थैंक यू। so then very valid and competent points shared by Bhushan sir. So then summarizing his points, they are like, for the country's well-being, in spite of focusing on the higher income, they should focus on the happiness level of the citizens. So then now whichever group was able to convince the audience, we will let the audience decide for them, decide for themselves, and soon we will have a discussion with the audience or audience as well. But before that, I would like to have a small discussion with 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 everyone, including the audience. So then during this debate, one group was saying that when this act will be implemented, so it will it will be a barrier to the company's success. But on the other hand, one another group argued that when this act will be implemented, the satisfaction level will increase, which will also benefit in the company's success. So then so let us have a small discussion on it. And so then who wants to start, who wants to go first?
Anyone? Okay. Rohit, can you repeat? Yeah, sure. Okay. Yeah, sure. So then the team who was speaking against the topic, they said that when the minimum wage act will be implemented, so then it will hamper company's success. Okay, but the another team, they argued that this act will help a lot in improving company's success. So then let us have a small discussion on this. यस, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी में जो भी आउटसोर्सिंग लड़के हैं उनकी एटलीस्ट मिनिमम स्किल नहीं रहती, लेकिन उनको उतने स्किल का पैसा हमको पेमेंट करना पड़ता है, एंड इट इज वेरी लॉस टू माय कंपनी विच इन कंपनी आई एम सर्विंग। सो और बाकी भी ऐसे अनस्किल्ड लेबर है, उनको भी काम देना है ड्यू टू माय कंपनी इज समवॉट इन सोशल फील्ड। सो वो भी बर्डन बहुत ज्यादा है, और हमारी गवर्नमेंट हमको उतने टाइप की सब्सिडी भी नहीं देती है कि हम उससे कोप अप कर सके। सो दैट्स वाई कि एज पर स्किल हमको आउटपुट भी चाहिए, और बाकी लोगों को काम भी देना चाहिए। इसलिए हमको लगता है एज पर स्किल उनको वेजेस देना चाहिए आज की डेट में। क्योंकि आज जो भी सिनेरियो है ये लेस सोशल है और हेवीली कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू में जा रहा है, इसलिए। ओके, थैंक यू भूषण सर। सार्थक। यस, सो आई वांट टू स्पीक। तो एक साइंटिस्ट था, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्सपेरिमेंट ऐसे कुछ था कि जैसे हम लोगों को पता है कि 6 डे वर्किंग चलता है, तो उसने 5 डे वर्किंग करा। तो उसने ये देखा कि 5 डे वर्किंग और कम हार किए। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में या मोस्टली वर्ल्ड में 9 हार लॉ है कि 9 घंटे काम करेंगे, 1 घंटा उसमें खाने का दिया जाएगा, तो 8 घंटे काम करना पड़ेगा। तो उसने वो 8 घंटे को छोड़ के 6 घंटे काम करने को बोला कि तुम 6 घंटे काम करो। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो 200 पीपल पे हुआ था। तुम 6 घंटे काम करो, 5 दिन के लिए काम करो। तो इसका जो वो ओवरकम हुआ, उसको ये दिखा कि अगर वो जो लेबर थी जो पिछले 1 हफ्ते से 200 पीस तैयार कर रही थी, अगर हमने एग्जाम्पल, तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो उसी लेबर ने 350 पीस तैयार करे। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास प्रेशर नहीं था, माइंडसेट उनका फ्री था। अगर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी भूषण जी ने कहा कि हमें उनको मिनिमम नहीं देना चाहिए, स्किल पे देना चाहिए, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर हम मिनिमम देंगे तो उनको होगा कि हम किसी रेस में हैं, और आज के डेट में हर बंदा एक बेटर लिविंग और एक बेटर स्टैंडर्ड चाहता है। तो जब वो अपने आप को रेस में पाएगा तो वो अपनी स्किल खुद करेगा डेवलप, और उसको होगा कि मुझे मिनिमम मिल रहा है। बट इंसान कभी भी मिनिमम पे नहीं रहता, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है कि आप उसको कितना भी दो, स्किल कम है। तो इंसान को इससे और भूख होगी और वो अपने स्किल्स पे काम करेगा। और कंपनीज को, जैसे मेरे पार्टनर ने कहा, अंकित जी ने, कि अगर कंपनीज को 30 से 20% भी हो जाएगा ना, बट वो 20% प्रॉफिट वो 1 साल के लिए होगा। बट हम ये देख पाएंगे कि 1 साल के बाद उनको 20 से वही प्रॉफिट 40% भी हो सकता है। जो हम 10% कम कर रहे हैं, हम वहाँ पे 20% हाइक भी ले सकते हैं। सो थैंक यू सर। Okay. Shubham ji, you want to add? You want to say something? As Sarthak ji said, that if there is a minimum wage for the working class, right? So they will compete with each other. But I have to disagree with that point. If the companies are paying minimum wage to everyone, right? Like the job is not worth that money. So those people would not be competitive because they are getting enough money, and they will be lazy in that job. And as the main point was the firm success, right? So if the company is not able to pay the workers their salary, then how will it be successful in the long run? That's a big question, right? So in India, most of the firms are startups, right? So they will not be
they will not be able to afford the salaries that they have to pay their employees, and they will have to shut down in the long run. So thank you. Ankit? या हेलो सर, मेरा पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे सभी स्किल्ड लेबर की बात कर रहे हैं कि जिसके पास स्किल हो उसी को ही जॉब मिलनी चाहिए, उसी को ही सब कुछ ये है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, हाँ कि ये बात तो ठीक है कि जिसके पास स्किल हो उसको ही मिनिमम मिलनी चाहिए। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अब सपोज मैं अभी सीए कर रहा हूँ, अगर एक सीए की सैलरी आप देखो एज ए फ्रेशली क्वालिफाइड, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हालांकि 3 साल का आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस भी होता है, बट वो ये काउंट नहीं करते एज ए मेजर। तो हम अगर मान के चले कि एज ए फ्रेश कोई सीए है तो उसको 8 से 10 लाख का पैकेज मिलता है। मैं 1-2% एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, मैं मेनली एवरेज बात कर रहा हूँ, तो 8 से 10 लाख का पैकेज मिलता है। और वहीं अगर हम देखें तो एक कंपनी एक महीने के अंदर अंदर उसी सीए से 30 लाख का काम करवाती है। ये मैंने खुद भी देखा है, जो मेरे साथ में सीए बने हैं उन्होंने खुद भी बताया है कि एक सीए जिसको एक महीने में 80 से 90 हजार रुपए मिल रहे हैं, उनसे काम जो करवाया जा रहा है वो है 30 लाख रुपए का। तो क्या मुझे ये रेशो बहुत मतलब बहुत ही गलत लग रहा है। अगर आप सोच के चलो कि यूएसए के अंदर आपको 7 से 8 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो वहां मुझे फिर भी लगता है कि हाँ कंपनी ने जो भी उनके ओनर है उन्होंने रिस्क भी लिया है, तो उनका ज्यादा प्रॉफिट बनता भी है। बट यहाँ रेशो बहुत ही गलत है इंडिया के अंदर, तो मैं उसके बारे में हाईलाइट करना चाहूंगा। और यहाँ इंडिया में ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा कम है। अगर आप अगर 6-7 साल से हो लगे हुए हो तो आपकी सैलरी आप देखोगे कि 3 गुना होगी जिस पे आप ऐसे फ्रेशली लगे थे। बट बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर आपके हर एक काम को देखा जाता है, यहाँ पे हर एक काम को नहीं देखा जाता। वहाँ अगर आप डे टू डे बेस पे, अगर मेरे को कोई असाइनमेंट मिला, मैंने वो पूरा किया, तो उसके लिए मेरे को बोनस भी मिलेगा। तो वहाँ पे पर्क्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, बट यहाँ पर्क्स भी नहीं होते। तो ये मेरा पॉइंट ओके, आई थिंक। थैंक यू अंकित जी। संतोष सर? Yes, Rohit, thank you. Just I would like to mention few points, which is I think it is almost against the topic. So first of all, we cannot compare our Indian minimum wages with US or other countries. There are so many reasons. The first reason is because the population and the reservation in India, this is not implemented in any other countries. US doesn't have this population or the reservation type what India has. And the second thing is we have government sector and private sector. So the minimum wages can in government sector will be decided by the government. In private sectors, the individual company owners will decide. So we cannot compare the minimum wages of government sector should be the same as the private sector. And in India, I think 25% of the population are working in government sector and maximum majority are working in private sector. And those, as many of the candidates have already mentioned, so there are many new startup companies which they cannot afford the new employee for the minimum setup. And in India, the demand is less and the supply is more. But in US, the demand is more, the supply is less. So that the same logic cannot work in both the countries. So what I believe is, as if the demand is more, and so in India, the demand is less, the supply is more. So first of all, getting job is itself is difficult. Then later on, we can think of the minimum wages. First of all, people are in search of job. Wherever they get at least some good amount of money, whether it is 100, 200 or 400, doesn't matter. Either they should feed their family. So if they get a job, that is a big deal in India, first of all. And so the other thing, if that company has to pay the minimum wages, they have to provide ESI, EPF and everything. And these the union leaders are very smart enough in India.
So if they don't get any one of these things, then they will go on strike and the company will go bankrupt or they have to close the company. So private company has to think of their side as well as the other side also. That's my point. Thank you. Thank you, Santosh sir. So then now we will just take one participant, and then we will go towards the audience. So Afjal Khan, Afjal ji. हाँ जी सर, मैं बोलना चाह रहा था कि है जैसे है अंकित भाई ने और सार्थक भाई ने बोला कि स्किल्स मैटर करती है, तो है ये लोग भी एग्री करते हैं कि है स्किल्स मैटर करती है जब भी आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगा। बट सर अपने जो इंडिया का सिस्टम है यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल कंपनी में क्या काम होता है वो कंपनी में जाके पता चलता है। जब इंसान कॉलेज में होता है, स्कूलों में होता है, वहां का जो अपना है स्टडी सर्कल होता है वो थोड़ा डिफरेंस है। तो सर जब तक ना वो चीज भी सही नहीं होगी, अपने इंडिया के इंसानों को हाई वेजेस नहीं मिलने वाले, क्योंकि एज कम्पेयर टू अमेरिका ठीक है, वहां का पढ़ाई का लेवल काफी ज्यादा हाई है। वहां पर आज के 10 साल पहले से बच्चों ने लैपटॉप अपने स्कूलों कॉलेज में देखा था। यहाँ पर अभी भी ऐसे अभी भी बच्चों ने लैपटॉप नहीं देखा स्कूलों और कॉलेजेस में। ओके सर, थैंक यू। Thank you Afzal ji. Now we will move towards the audience and let them decide that which group was able to convince them the more. So I will invite the audience to speak up. शुभम जी, शुभम कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? जी नमस्कार सर और सब पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। वैसे तो मैंने तो आज इस इवेंट को काफी लेट ज्वाइन किया है, तो मैं उतना ज्यादा सुन नहीं पाया हूँ कि और पार्टिसिपेंट्स ने क्या क्या कहा और उनके पॉइंट्स क्या क्या थे। लेकिन मोटा मोटी तो एक पता चल गया है कि एक इसके खिलाफ है और एक इसके पक्ष में है। तो मैं भी इसके अगेंस्ट साइड में ही मतलब मैं भी इसका पक्ष नहीं लेना चाहूँगा। मैं भी इसके अगेंस्ट साइड में ही हूँ, क्योंकि ये मिनिमम वेजेस की अगर बात की जाए तो हमारा जो है ना, हमारा जो ये इकोसिस्टम, हमारा जो ये गवर्नमेंट और बिल्कुल हर चीज ये हमारा यूएस से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम हर चीज यूएस का हम देखा नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीज तो हमें खुद भी डिसाइड करना चाहिए। अब अगर हम हर चीज के लिए अगर हम पश्चिमी देशों की ओर ही अगर भागेंगे तो फिर हम खुद क्या कर सकते हैं। हम तो ऑलरेडी विश्व गुरु हैं और काफी काबिल हैं। हमें कोई कंट्री सिखा नहीं सकती कि हमें क्या करना है, और कोई अदर कंट्री का ये राइट भी नहीं बनता है कि हमारे देश के पक्ष में कोई बोले। तो मैं तो अब मानता हूं कि ये स्किल पर डिपेंड होनी चाहिए। जो बंदा जैसा काम करेगा उसे वैसी तनख्वाह मिलेगी, और यही हकीकत भी है और यही होना भी चाहिए। अगर हम मिनिमम वेजेस अगर हम फिक्स कर देंगे कि तुम काम करो चाहे नहीं करो, तुम्हें तो इतना मिलेगा ही, तो
तो वो व्यवस्था बिल्कुल लचर हो जाएगी, वो लोग फिर काम करना बंद कर देंगे। हम लोग अपने गवर्नमेंट ऑफिसेज में देख सकते हैं कि किस तरह की वहाँ पे होती है काम, मतलब बिल्कुल वो काम को टालते जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चाहे तो हम जो करें हमारी जॉब तो जाने वाली नहीं है। तो अगर I think he lost the connection. Yes, yes. So then, anyone from the audience wants to say something? Yeah, Rohit, just I would like to give my feedback about this debate. Is it Sure, okay? sure, sir. Yeah, yeah. Yes, sir. Yeah, and I have really enjoyed this debate session. Both of the team has put up very valid points, and both are valid points. It is not that minimum wages should be set is not 100% true, or non-minimum wages not 100% true. And I believe that it depends on the situation where you want to implement this. So there are many other factors we have to look into that. After that, we can go as per that minimum wages. And I would like to appreciate all the team members. Everybody has spoken well. Good, keep it up. Thank you. Thank you. Thank you, Santosh sir. Uh, Royal ji, can I speak? Yeah, sure, sure. क्योंकि आपने दूसरे राउंड में यानी कि मेरे से ये लिए नहीं है व्यू, आई थिंक यू फॉरगॉट मी। नहीं एक्चुअली नहीं अकमल जी, एक्चुअली मैं ये वाले राउंड में सिर्फ ऑडियंस का ही रिव्यू ले रहा हूँ since participants had got their chance, so that's why. एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था इसके, क्योंकि मैं इस टॉपिक के अगेंस्ट हूँ। तो जिस तरह आई थिंक सार्थक जी ने कहा था कि अगर कंट्री में यानी मिनिमम वेज सेट हैं तो हर बंदा अपना यानी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा और वो जॉब लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लेंगे तो कंट्री में जॉब्स जितनी है वो तो उतनी ही है ना, चाहे कोई जितनी भी अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर ले, जॉब्स तो उतनी है। तो जिसके पास स्किल्स अच्छी हो जाएंगी वो 2-3 बंदों की जॉब एक बंदा ले लेगा, बाकी बंदों के पास जॉब नहीं रहेंगी। एक तो ये पॉइंट हो गया। तो क्योंकि मतलब कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो ऐसा करते हैं कि अगर कोई बंदा उसने अभी की है डिग्री तो उसको वो 4-5 हजार पे 8-10 हजार पे उसको जॉब दे देते हैं, मतलब एज ए इंटर्नशिप कि फिलहाल आप इसमें काम करो और जब आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी तो हम आपको प्रमोट कर देंगे। तो फिर वो चीज नहीं होगी। तो उस टाइम क्योंकि अभी जो एक इंटर्नशिप है उसमें बंदा यानी कि कंपनी में एंटर भी हो जाता है और कुछ सीख भी जाता है और बाद में उसकी वेज भी इंक्रीज यानी हो जाती है। और अगर उसमें एक मिनिमम सैलरी होगी तो यानी कि इंटर्नशिप टाइप की चीजें फिर नहीं रहेंगी। तो कोई बंदा फिर किसी कंपनी में एंटर ही नहीं हो सकेगा अनलेस ही हैव द स्किल्स। और तो जब वो इंटर ही नहीं हो सकेगा उस कंपनी में, काम ही नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं कि काम कैसे होता है, तो उसकी स्किल इंप्रूव कैसे होंगी। एक मेरा ये पॉइंट था। और दूसरा एक ये चीज थी कि अभी जिस तरह मतलब इंडिया की अप्रोक्सीमेटली यानी कि 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें यानी कि उसमें कंपनीज भी बहुत ज्यादा होंगी। तो जिस इदारे ने यानी कि जिस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके पास भी इतना स्टाफ होना चाहिए कि वो हर कंपनी को मॉनिटर कर सकें। तो मतलब अभी अगर गवर्नमेंट के पास यानी कि इतना फंड नहीं है तो वो इतना स्टाफ कहाँ से लेके आएंगे कि वो हर कंपनी को पहले वो मॉनिटर करें कि कौन सी कंपनी इतनी वेज दे भी, ठीक है, मतलब आप लोग ये इसका रूल बना दें, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा। और इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं कि वो अपना यानी कि अपना फंड या अपना रेवेन्यू खुद
जनरेट करते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है कि गवर्नमेंट अपना यानी कि इसमें फंड या रेवेन्यू जो स्टाफ को पे करेंगे वो खुद ही इसमें से जनरेट कर सके। ओके, थैंक तो यू। वो जो स्टाफ होगा वो टोटल यानी कि उसका टोटल जो सैलरी होगी उसका टोटल पेमेंट गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। जी जी, थैंक यू अकमल जी। एंड इफ एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस wants to share Okay, something. I'll just share my opinion as Sure, an sir. audience member. So I actually really enjoyed the entire debate. Very valid points coming from both the sides. I am myself inclined more towards against the topic because of it's primarily one thing. We cannot compare India to America because these are two different countries, two different types of countries. America is more developed country, and India is more developing country. In India, the cost of living in say Bangalore is not the same as a cost of living in say like smaller cities like say Ajmer or Jalgaon. So we cannot have expect the same kind of pay scale everywhere. So it is not, and India is a large country, very diverse country. So that is not possible. And the second reason is, why is the outsourcing industry flourishing in India? Why is IT industry flourishing in India? It's because of this minimum pay in US. Companies want to outsource their work to India because they're trying to save cost. So ultimately, these businesses will try to save costs, right? So I feel that India should not blindly follow the West because it is there. We should see what is best for ourselves and try to make that as a strength. I mean, what works best for us. So it is my opinion as an audience. Thank you. Thank you, Rohit. Over to Thank you. you, sir. Thank you very much, sir. So then it seems that the team speaking against the topic had convinced the audience. So yeah, but last but not the least, each participant's points were very valid. And thank you everyone. Thank you for being a part of this. Bhushan sir, do you want to say something? Yes. Yes, Rohit. My last point is that in holistic way, the Indian government we will have to focus on the mentality of the workforce and not on the फाइनेंशियल टर्म्स के उसको इतना पैसा दिया तो वो खुश रहेगा, तो ये ऐसी बात नहीं है। और द ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इज द इंडियन ब्रेन ड्रेन। ये ब्रेन ड्रेन क्यों हुआ है? क्योंकि इंडियन लोगों को यहाँ पे प्रॉपर सेटिस्फेक्शन ऑफ वेजेस नहीं मिला उनके पोटेंशियल से, कि उनका जो पोटेंशियल है पर पोटेंशियल से उनको उस टाइप का जॉब नहीं मिला, इसलिए इंडिया का ब्रेन ड्रेन हुआ। और मैं एक क्लासिक एग्जांपल देना चाहूंगा। इंडियन क्रिकेट टीम भी वही थी, लेकिन उसने प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दिया। एक कंसिडरेबल ट्रॉफी थी, उसमें वो प्रॉपर नहीं दिया, लेकिन सेम टीम बट कोच इज डिफरेंट। वो कोच था गैरी कर्स्टन, और गैरी कर्स्टन ने इंडिया को हमारा जो वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो है वो उसने अचीव करके दिया। सो व्हाट आई एम मीन टू से, द रिफॉर्म स्टार्ट फ्रॉम हायर मैनेजमेंट टू लोअर एंड नॉट फ्रॉम लोअर मैनेजमेंट टू हायर। तो उससे क्या होगा कि प्रॉपर सेटिस्फेक्शन ऑफ द वेजेस होगा और एवरीथिंग विल बी सेट राइट फॉर द इंडियन कंटेस्ट। Thank you. So thank you, Bhushan sir. Thank you for sharing your
wisdom on this topic. So thank you everyone, and thank you for joining this and making this a successful event. Thank you. Happy Sunday, everyone. Thank Same you, to Evo. Thank you, Thank you, everyone. everyone. Thank you, everyone. Bye bye. Bye everyone. Bye.